Today, my guest Nandini, founder of Goyal Lab Grown Diamond Jewelry, is going to tell you about this very question which comes in your mind: from whom to buy lab grown diamond jewelry, why to buy, where to buy. They have their manufacturing unit in MIDC Andheri, and they take care of the craftsmanship, metal, quality of the diamond, cut, clarity, color, everything with utmost precision. So let's move to Nandini. Hi, Nandini. Hello. So, Nandini, most jewelry brands want you to trust the name, but you want people to trust the diamond. Why? तो सोनल, सदियों से हम ये देखते आ रहे हैं दैट व्हेनेवर पीपल गो टू बाय ज्वेलरी दे ऑलवेज हैव दिस ट्रस्ट फैक्टर दैट आई वांट टू गेट दिस ज्वेलरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, सिल्वर में और डायमंड में. हम भी यही चाहते हैं एज अ फाउंडर ऑफ गोयाल. मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग मेरे पास एक ट्रस्ट फैक्टर से ही आए, बट मैं ये भी चाह रही हूँ कि पहले मेरे पास लोग डायमंड खरीदने आए, वो एक ट्रस्ट फैक्टर है. और जो मैं डायमंड बेच रही हूँ वो लैब ग्रोन डायमंड है जो सर्टिफिकेशन के साथ ही आता है. So, Nandini, Goyal is a manufacturer and directly selling to the customer. इसका सिंपल वे में मीनिंग क्या होगा जो आपसे खरीद रहे हैं उनके लिए? इन सिंपल टर्म्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी एज अ मैन्युफैक्चरर हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं. देर आर नो मिडल मैन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. आप आइए हमारे पास कोई भी डिज़ाइन लेके और हम आपको आपका ज्वेलरी तुरंत बना के देंगे. Okay. So, you mean to say कि I can come and customize also design? Yes, absolutely. We customize the jewelry. मैं जैसे मैंने कहा कि आप अपना कोई भी डिज़ाइन लेके हमारे पास आइए एंड गोयाल विल मेक श्योर दैट वी गिव यू दैट ज्वेलरी इन द करेक्ट pricing and customization that you want. That is actually an advantage from directly buying from a manufacturer. That is us. Okay. And so, as you said, there is no middleman. So, means directly there won't be any plus price? देखिए, व्हेन यू बाय फ्रॉम अ रिटेलर, अब रिटेलर से क्या होता है, फर्स्ट द रिटेलर विल बाय फ्रॉम अ होलसेलर, तो देन उसका प्राइसिंग अपना मार्जिन्स लेके वो हमको बेचता है. व्हेन यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर देर आर नो मार्जिन्स इन्वॉल्व, देर आर नो extra cost involved. There is correct pricing directly coming from the manufacturer. Okay. So, मतलब better pricing. Correct. Right. So, Nandini, you are saying अगर मैं गोयाल जो कि एज अ मैन्युफैक्चरर है उनके पास आती हूँ कोई ज्वेलरी लेने के लिए और वही ज्वेलरी मैं बाहर किसी दूसरे ब्रांड से लेती हूँ तो मुझे अच्छा खासा प्राइस में डिफरेंस आएगा? एब्सोल्युटली. देखिए, जब आप हमारे पास गोयाल के पास आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि वी सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर एज अ मैन्युफैक्चरर. सो जब मैं ये कहती हूँ तो उसका प्राइसिंग आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर रेट्स पे ही मिलेगा. आप जैसे किसी भी अदर brands, if you go to, obviously they will charge their commission because they're not directly selling, right? So Goyal does that. Goyal sells directly to its customer. Wow, that's great. So I would like to tell my viewers, अगर आपको ज्वेलरी एक बहुत अच्छे प्राइस पे चाहिए है, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इन सिल्वर एंड गोल्ड एंड दैट टू कस्टमाइज ऑल्सो, तो कहाँ जाना है? गोयाल के पास. एंड आपको सारी डिटेल्स इसमें मिलेगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा. सो नंदिनी, जब कोई भी पहली बार ये वर्ड सुनता है ना लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, तो उसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या है ये. जैसे मैंने भी पहली बार ये सुना ना, लैब ग्रोन क्या होता है, लैब में कैसे बनता है, बहुत सारे सवाल थे. सो मैं चाहूंगी कि ये सारे सवालों के जवाब आप दें. ऑफ कोर्स, ये सवाल मेरे पास पहली बार नहीं आ रहा है, मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आई वांट टू क्लियर द मिसकंसेप्शन कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट लैब ग्रोन डायमंड जो है वो लेबोरेटरी में बनता है. नेचुरल डायमंड हम जैसे सब जानते हैं कि माइन से आता है. लैब ग्रोन डायमंड इनफैक्ट ये है कि हफ्तों में बन जाता है और नेचुरल डायमंड को सालों लग जाते हैं प्रोसेस होने में और इनफैक्ट आने में. ये एक लैब ग्रोन डायमंड का ब्रेसलेट है. आप कुछ डिफरेंस बता सकते हैं कि ये नेचुरल है? No,
it's sparkling and it's so beautiful. मतलब I तो cannot make out. Yes, so absolutely here I want to also say that natural और lab grown diamond में कोई difference नहीं है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, same cut, same clarity, same finishing, दोनों के certifications आपको मिल जाएंगे. Beneficial in fact to buy a lab grown diamond because it is ethical and it is sustainable coming from the lab, and also it is fairly priced. It's just that one is made in a lab and the second comes out naturally from a mine. So fairly price पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये लैब ग्रोन डायमंड से बना हुआ है ब्रेसलेट, और अगर यही मैं इतने सारे डायमंड्स, इतने बड़े डायमंड्स अगर मैं नेचुरल डायमंड के होंगे तो प्राइस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. रफली ये ब्रेसलेट अराउंड 1.5 lakhs में आपको मैं दे सकती हूँ. ओह माय गॉड. एंड अगर आप सेम ये ब्रेसलेट नेचुरल में बनाए तो आपको इसका 3 times द प्राइस देना पड़ेगा. So I'm not saying, obviously people have their own choices. They will buy natural where they have to. They will buy lab grown where they have to. I'm just saying if you're investing in lab grown diamond, it's a win-win situation for you because you're paying less, you're getting the same quality as a natural diamond, and you can, flaunt it. एक्चुअली एंड मतलब मैं तो अगर बोलो तो मुझे लगेगा कि 4 lakhs 5 lakhs में मैं नेचुरल लूँ और ये ले लूँ और इसके साथ मैं 2-3 चीजें और ले सकती हूँ. सो नंदिनी, टेल मी व्हाट मेक्स लैब ग्रोन डायमंड जेन्युइनली स्पेशल? So at Goyal, we are very proud to say that we make lab grown diamond jewelry for very special reasons. Firstly, lab grown diamond is ethical, it is sustainable, and it is, it has the same physical and chemical properties as a natural diamond. तो अगर आप किसी को भी बोलेंगे कि किसी एक्सपर्ट को भी बोलेंगे कि आप डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन अ लैब ग्रोन डायमंड एंड अ नेचुरल डायमंड, without a microscope or a specific lens, he or she will not be able to make out that difference. Also because lab grown diamonds are pocket friendly, so when I am buying as a customer, I also want to make sure कि मैं investment भी कर रही हूँ और जो मेरे pocket से जा रहा है it is making sense to me, right? Because you're investing in a diamond which is pocket friendly, so again it is a win-win for the customer as well. So I would tell the world, tell my customers, tell everybody that lab grown diamond is identical as natural diamond. Why not save the money and invest in lab grown diamond, then buy a natural and burn your pockets. विमेन्स को क्या चाहिए? ज्यादा ज्वेलरी चाहिए. करेक्ट. और मेंस को क्या चाहिए? पॉकेट फ्रेंडली. करेक्ट. सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, गिफ्ट देने वाले के लिए भी, गिफ्ट लेने वाले के लिए. एब्सोल्युटली. So Nandi, tell me what is the most beautiful thing about lab grown diamond which still people have not discovered? देखिए, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो लैब ग्रोन डायमंड की है वो ये है, बिकॉज इट इज़ मेड इन अ लेबोरेटरी, the people have control over how it is going to be made, right? So there are very few flaws, and it is made with precision, and it is symmetrically and chemically perfect. अगर आप नेचुरल डायमंड देखने जाएं तो उसमें बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है कि जैसे वो टूट जाता है, कट हो जाता है, उसके जो कट्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते. बट बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड एक लेबोरेटरी में बना होता है, you have full control over it because it is made in a highly controlled environment. So I think that's the most beautiful thing about a lab grown diamond. And you get a most beautiful jewelry out of it. Yes. Which is people want, clients want, and yes. You are satisfied also what you're giving, it's the best. Yes, and lab grown diamond jewelry में भी बहुत सारे shapes and cuts हैं, like natural diamonds. You get rounds, you get different kinds of fancy shapes also, right from hearts to your cushions to your ovals. आपको जो भी shape चाहिए lab grown diamond में वो सब आपको मिल जाएगा. It is and आपको जल्दी मिल जाएगा. Naturally में क्या होता है, it takes years for that diamond to become perfect. But in lab grown diamond, because lab में बना है, you can tweak and twist and make right. your diamond the way you want.
सो नंदिनी, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से और शायद बहुत से व्यूअर्स की भी दिमाग में आता होगा कि नेचुरल डायमंड जो आता है वो तो हमें नहीं पता किस शेप में मिलेगा, कैसा मिलेगा, छोटा या बड़ा या कुछ, तो उसको जब शेप करने जाते होंगे तो वेस्टेज भी होता होगा बहुत। हाँ, एब्सोल्युटली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ हार्ट शेप डायमंड का, या कोई भी शेप, लेट्स जस्ट टेक हार्ट शेप। अगर आप हार्ट शेप डायमंड को नेचुरली बनाएंगे तो उसमें एक बड़ा डायमंड यूज़ होता है, देन फिर वो हार्ट शेप में कटता है। नाउ आप समझ लीजिए वो बड़ा डायमंड जो हार्ट शेप में कटता है उसका वेस्टेज भी बहुत है, एंड बिकॉज हम बड़ा डायमंड से वो हार्ट शेप कट कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस एज वेल. The same thing if you're going to do in a laboratory with a lab grown diamond, you just have to shape that diamond in the shape that you want. It is going to be less costly. You will get the exact shape that you want. There will be no cuts, there will be no breakage, there will be no wastage. I will tell all the viewers that uh, you can get all the shapes that you want in lab grown diamond at a cheaper rate, and in fact in all the colors that you want. We also have lab grown diamonds in pinks, in reds, in sapphires, blues, anything. And जो natural color है वो तो हम certifications के साथ देते ही हैं. Wow, that's really good. Like you can make your jewelry as per your requirement, as per your liking. So designs, as she said earlier also, कि designs भी आप अपनी customize करवा सकते हो, तो यहाँ तो आप अपने shapes तक customize करवा सकते हो, Yes, right? absolutely. So Nandini, tell me and tell our viewers, from one piece diamond से एक पूरी ज्वेलरी बनने तक की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है? मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे होता है ये सब. गोयाल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MIDC में जो है उसमें स्टार्ट टू फिनिश स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करते हैं. राइट फ्रॉम स्केचिंग ऑफ द डिज़ाइन टू कैड जो 3D में आपको दिखता है, टू योर डायमंड सेटिंग, to your wax setting, to your polishing, to your finishing, to your final touches. We make sure, especially I make sure that I am involved in each and every stage of the jewelry making, because every piece is of that we make of Goyal is very personal to me. So I make sure that जो भी process और जो भी department में जो चल रहा है, I make sure that I get involved, and each stage of production comes out with precision. So Nandini, if I come up with my design, will you give the same, everything will be the process and everything will be the same? Yes, absolutely. आप कोई भी डिज़ाइन हमारे पास लेके आइए at Goyal, we will make sure that the design is replicated as it is, because हमारी जो पूरी टीम है एंड प्रोसेस है, हम यही मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट को जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करें, राइट फ्रॉम द डिज़ाइनिंग टू पॉलिशिंग टू डायमंड सेटिंग, वैक्स सेटिंग, फाइनल टचेस. हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जब क्लाइंट jewelry लेके जाए and they are very happy and they come back to us with more such designs. So Nandini, as a buyer, मैं मैन्युफैक्चरर के पास आऊँ या मैं रिटेलर के पास जाऊँ, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा एज अ गोयाल मैन्युफैक्चरर है उनके पास आने में? So as a गोयाल मैन्युफैक्चरर जो हम हैं, अगर आप हमारे पास डायरेक्टली आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आपका स्मूथ और ईजियर हो जाएगा. It is only going to be a one-way communication between us and you, which is the final customer. You don't have to go through the whole process of first dealing with a wholesaler, then going to a retail shop and buying that jewelry. Secondly, when you come to us, suppose आपके पास एक specific design है जो आपको बनाना है, तो we will make sure. क्या होता है कि जब आप रिटेलर स्टोर पे जाते हैं तो वो आप डिज़ाइन उनको दिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमको पूछ के बताना पड़ेगा. Here when you are coming to us directly, we can, I can just ask my design team if this is possible, and I will make sure, I will try my best for it to become possible, and you will get the exact same design that you require. सो नंदिनी, मैंने आपको कोई डिज़ाइन दिया और आपने बोला हाँ ये बन जाएगा, आपकी टीम्स ने बताया, डायरेक्टली मैं आई हूँ, और लेकिन फिर भी जब डिज़ाइन पूरा बन जाता है और मान लीजिए मुझे फिर कुछ लगता है कि ये हुक है या एनीथिंग, समथिंग लाइक दैट इज मिसिंग और समथिंग, सो क्या आप उसको भी ठीक कर देंगे?
देखिए, एक मैन्युफैक्चरर होने का यही फ़ायदा है, वी हैव मैनी क्लाइंट्स हू कम टू अस ऑन डेली बेसिस कि आप इसको ठीक कर दो, ये एक हमारा एक हुक निकल गया है, इसको जोड़ दो, हमारा पॉलिशिंग निकल गया है, इसको प्लीज़ थोड़ा साफ कर दो। सो that's a one advantage that Goyal clients have, that they can come to us any time of the day with any changes or any requirements that they want, and we will try to fulfill them at a very minimal cost, at a very timely phase, and give the customer the quality and the precision that they always are dreaming of, and they want. So आप हमारे पास कोई भी ज्वेलरी, आपकी कोई भी ज्वेलरी लेकर आइए, अगर आप चाहते हैं कि हम उसको रीपॉलिश करें, हम उसका डायमंड चेंज करें, हम उसको उसका हुक जो टूट गया है वो जोड़ें, इट गोयाल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो नंदिनी, एक चीज तो मुझे पक्की होगी कि गोयाल एज अ मैन्युफैक्चरर अगर मैं आती हूँ तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट मनी का सेव करती हूँ, जो कि रिटेलर्स के पास जाती हूँ तो वो मुझे मिडिल मैन का वो सारा देना पड़ता है। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया और हमारे व्यूअर्स को भी आ गया होगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर करो जहां पे क्लाइंट ने दोनों चीजें करी हो, कि उसने मनी भी सेव किया हो और जो पीस उसको मिला हो वो भी, उससे वो बहुत खुश हुआ हो। तो आपके लिए वो क्या मोमेंट ऑफ ट्रुथ था जो आप मुझे शेयर करें? कुछ महीनों पहले एक ग्रैंड डॉटर आई थी, शी वाज अराउंड in her 20s, and the grandmother was in her late 80s. So the grandmother had a very specific earring design that she wanted to make for a daily wear. So the granddaughter actually sketched the design and showed it to me कि मेरे को ऐसा ही piece चाहिए. And because it was for her nani, I guess. So we also had that, every piece of Goyal has that sentimental value. It's not just an accessory. It is we want every piece to become a memory for the client. So we made sure that ki jo design hai wo as it is replicate ho, and we also had the thing in mind that because an elderly person is going to wear it, we have to make sure that jo uska screw hai earring ka, wo we made sure that it is very smooth to the ears, and it is not hurting. So and obviously she had a budget in mind, which all the details the granddaughter clearly mentioned it to us. And it took us a week or so to get the design made, but I can happily say that I got the testimony from the client, who is like my own nanny, and she was very very happy, and she was like, मेरा budget में भी काम हो गया, and she flaunts the jewelry to all her friends and family members that this piece is made by Goyal, and मैं काफ़ी जगह गई हूँ ये piece को लेके कि मुझे ऐसा ही design दो, but except Goyal nobody else could make it. So yes, this experience will clearly stay with me, because A, it has a very sentimental value, and B, because we at Goyal were able to crack that at a budget that she wanted, and at a time that she was hoping that she would wear the earring. So yeah. Wow, that's such a beautiful and emotional touch. Yes, definitely, Nandini. I also feel कि jewelry is not only the piece; it's feelings when people buy it on occasions also. Yes, it's very, Goyal is very emotional to me because uh, frankly speaking, मैंने ना ही clients के jewelry बनाए हैं, but गोयाल में मैंने खुद के personal wedding pieces भी बनाए हैं. Oh. So that is because obviously I have my own manufacturing unit. I took full advantage of that, and I have made my own jewelry pieces which have those sentimental values. गोयाल की जो आप टैगलाइन देखेंगे, which is your diamond, your story. By this, I want every client to experience that she can buy her own diamond jewelry and not wait for her husband or her friend or her fiance to gift her that. I want women out there that to express themselves and buy the jewelry as a memory. For example, agar if you want to buy an engagement ring for yourself, I don't want the customer to wait for her fiance
कि मैं लाके दूंगा. I want the customer to happily come at Goyal and capture that feeling of कि हाँ मैं एक खुद के लिए एक पीस ले रही हूँ जो एक sentimental value है. So Nandini, tell me, how does it feel to name each and every piece, Goyal, and when it goes out? It is a dream for every jeweler that जो भी उनके pieces बने client के लिए वो client खुशी खुशी उसको flaunt करे. It is the same for Goyal. Every piece that goes out, it is made of dedication, hard work, precision. So I'm very proud and to say that Goyal pieces have my name in it. So Nandini, if someone is buying diamond jewelry for the first time, आपके लिए उनको क्या एक ऐसी चीज होगी जो आप बोलेंगे to be cautious for? Sonal, I'm sure not many people know, but I want to really educate them that every piece of diamond that they buy, it comes with a certification of authenticity. We also at Goyal, whenever we are selling a diamond jewelry, the lab grown diamond jewelry, we give certification of authenticity, which is called the IGI certificate. It simply means that the diamond is certified and it is authentic. So people should know that whenever they go out to buy diamond jewelry, they should ask that do they give certificates, and with the certification you also have that satisfaction that I've bought the correct diamond. What are those specifications, by the way? So whenever we provide a certification of Goyal jewelry, which is the IGI certificate, it mentions all the 4 C's of the diamond, which is carat, clarity, cut and color. Okay. So one should see that all those 4 C's are mentioned in their certificate. Yes, one should be very cautious, and they should ask ki if suppose one of the C's are missing, they should clearly ask the jeweler that why is this missing, and they should also know that what is the meaning of these 4 C's. It is very important. Right. So you know now if you're going to buy a diamond, first you have to buy from Goyal lab grown diamond. So because they give the IGI certificate where all the 4 C's are in place. And even if you're not buying from Goyal but buying from any other place, it's Nandini. She's saying that you go for the certification because that is the something which is giving you authenticity of that diamond, that yes, it's a diamond, whether it's a lab grown diamond or a natural diamond. Correct. Right. So Nandini, गोयल की वेबसाइट है goyal.com, पर ऐसा हो सकता है क्या कि क्लाइंट ने goyal.com पे जाके ज्वेलरी देखी है बट फिर भी उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ सकता है देखने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है. एक क्लाइंट है जो मुंबई का ही निकला, जो वेबसाइट पे सर्व कर रहा था और उसको एक रिंग पसंद आई थी. But he called me up, and because he knew that we have a manufacturing unit in Mumbai, so he called us to ask if he can come down and see the products himself first before buying. So obviously we called him back, and we made an appointment that आप आइए, आप हमारा unit भी देखिए और आप pieces भी देखिए. So I would like to really say that he was so happy and satisfied with our pieces, because not only did he see the whole manufacturing unit, but he saw the whole entire range of the jewelry. तो उसने ना कि एक बल्कि वो 5 products on the spot लेके गया. So and which gave me as a founder of Goyal the confidence कि I am moving in the right direction. That people are buying the jewelry, people are liking the designs that I am offering them at a price that they are willing to pay. So yeah, it gave me that confidence to make Goyal where it has to go in the near future. Just call them and ask them, can they visit manufacturing unit, and instead of buying one, you can make your husband to shell out more money and buy you more. Isn't it a good idea? So Nandini, tell me where Goyal is going, and in next 10 years, where you see it? So apart from a manufacturing unit in MIDC and a website, we also have a store in Thane. So I would like all your clients and your viewers to know that come please visit us in Thane for an exclusive
collection because we have more variety there. Where you want me to take Goyal in the next 10 years, with God's blessings and blessings of elders, I want Goyal to spread out in each and every part of India and have each store in each city and become viral so that I want customers in every state, every city to visit Goyal and buy Goyal. Why don't you also plan a visit to Thane store? Because if you are seeing something on website or the manufacturer unit, but exclusive, as she said, they have a collection in Thane store. So let's play a rapid fire round. Sure. Okay. So my first question is lab grown diamond in one word? Value for money. True. The one jewelry piece every woman should own. A solitaire ring. So tell me the one thing that surprised people most about lab grown diamond. That how fast they are capturing the market. True. The biggest myth about the lab grown diamond? That they are fake. So they are not fake. Identical to the natural diamond. Am I right? Absolutely. Gold or platinum, which sets off a diamond better? I prefer gold. But solitaire on a platinum also looks good. It does, but people have their preferences and I prefer gold. Solitaire or statement, what do you personally love? A solitaire ring. Right. Someone gives you rupees 1 lakh to buy jewelry. What do you pick? I love rings. So rings all the way. Okay. The one thing India needs to unlearn about buying diamonds. The traditional way of buying diamonds, I think India has evolved and we are all digitally present now. And I think people should unlearn the traditional way and generations which is coming up. I think people are already more aware of the diamonds and the jewelry that they are purchasing. I think very near future हम शायद ये सारे जो 10 minutes way वाले delivery में भी शायद diamonds देखने लगे. Sure, and with AI coming up, I think AI is also going to sell diamonds to you now. True. So Goyal 5 years from now, one word. Viral. Yes, so make this podcast viral and Goyal viral. So let's sum up this podcast with few tips and few good, memories about Goyal diamond, lab-grown diamond jewelry. What would you like to tell about everything what we have spoken so far in just few nutshells? Goyal in a nutshell, we have a manufacturing unit in Andheri. We have our online presence by the name of goyal.com and we have a store in Thane. We sell lab-grown diamond jewelry both in silver and gold, which is pocket-friendly, ethical and sustainable. We sell our own designs and we customize as well. So come to Goyal and get your designs the way you want.